Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. How are Mm, you, sir? Fine, fine, completely fine. Okay. So, in last class, we have started discussion about Indian National Congress, right? Basic details or informations we have already discussed. Now, in last class, I have told you that there were two groups, right? One group was the moderate group, and the second group was the extremist group. Now, we also understand the basic difference between moderate group and extremist group. Differences in outlook, approach, all these basic details and informations we are familiar with. In last class, I have also discussed with you that in the first phase of Indian National Congress, that was from 1885, Indian National Movement, first phase of Indian National Movement, sorry, okay, that was extended for about a period of 20 years. Okay, here in this phase, Indian National Congress, this political party was dominated by moderates. Is it clear? It means moderates were basically designing, okay, the programs of INC in this phase, and they believe in 3P method. Okay, they believe in the outlook that British will ultimately bring reforms in India. Okay, it means to some extent they believe that British rule in India is for the betterment of the Indians. So initially we have to take advantage from this British rule. But within these 20 years, the moderates raised a lot of demands, right? They raised a lot of demands. There were many political demands, administrative demands, okay, military demands, economic demands. I have not discussed these demands now, okay? I will discuss that demands also. So they raised a lot of demands, and finally, the demands were not realized completely, okay? The demands were not realized completely. The British government was not very much sensitive towards the demands made by Indian National Congress, and that's why the, you can say that, achievement was less or meager. Achievement was few or less in comparison to the demands. So dissatisfaction will be promoted. Clear? So the group of early nationalists, some early nationalists, out of these early nationalists will become dissatisfied by the British insensitive outlook to their demands. Okay, and now they will start making more radical demands. So when moderates will dissatisfy, become what? Extremist. When moderates will start, ऐसा नहीं है कि all the leaders, extremist leaders were extremists from the beginning of their career. ऐसा नहीं था, right? Previously, they also believed in the constitutional means, but when your demands will not be catered properly, what will happen? You will become more radical. The same happened. Okay, moderates became radical, and that's what that we say that that's extremist group, right? That is extremism. Now, criticism by extremists. This also we have discussed that how extremists were criticizing moderate strategy. Okay. Now, up in this critical outlook, I have discussed a lot of points with you. So, in these critical outlooks, there is one point that is called safety wall theory. That is very important and that we need to understand. So, write this point, safety wall theory. Yes, please. अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? ओके ओके ओके. Is it shared now? Right? Safety valve theory. Okay. Safety valve theory. This is one of the theory that we need to discuss. Okay. Safety valve theory. Safety valve theory. Okay. So we need to discuss what is this safety valve theory. Okay. Safety valve theory. So देखो, this is, you can say that this theory is a kind of criticism, okay, made by extremists. Criticism made by extremists to moderates strategy. So this is a part of criticism that was done by extremist leaders to the strategy of the moderate leader. ये criticism का हिस्सा है that I have already discussed with you, right? And who gave this theory? So the answer is Lala Lajpat Rai. Lala Lajpat Rai. This is an important fact. In the year 1916, in the paper
The name of this paper is Young India. Young India. He gave this theory, safety valve theory. And we all know that Lal, Bal, Pal. Okay? These three names. One is Lal, second is Bal, and the third is Pal. Okay? Lal, Bal, Pal. Plus, there is one another name, that is Aurobindo Ghosh. ठीक है ना? Lal, Bal, Pal, and Aurobindo Ghosh. They are the four most important names. So these are extremist leaders. Always remember the name of these leaders. They are the most popular extremist leaders. Lal, Bal, Pal, and Aurobindo Ghosh. याद रहेगा लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, and Pal means Bipin Chandra Pal. Okay, and this is Aurobindo Ghosh. So Lala Lajpat Rai is what? An extremist leader. In 1960, he gave a theory, okay, in his paper, and the name of this paper is Young India. And according to this theory, what he is trying to do, he is basically criticizing Indian National Congress, strategy of Indian National Congress. And how he criticized, this is very interesting. Lala Lajpat Rai said that INC was formed in which year? 1885. ठीक है. First phase of Indian national movement. First phase कब आ रहा है? 1905 में. And Lala Lajpat Rai giving this theory in which year? 1916. 16 में Lala Lajpat Rai gave this theory ना? Now Lala Lajpat Rai said that, okay, after the formation of Indian Nation Congress, okay, अब यहाँ पे एक और डाटा, that is what? 1757 to 1858. This is also colonial rule phase. Colonial rule phase. Okay, so Lala Lajpat Rai indicated an important fact. And what is that fact? He said that between these 100 years of colonial rule, the number of peasant revolt, tribal revolt, right, etc., the number of revolts and rebellions against the colonial rule was very high. It was large in number. Okay, it's very simple. That between these 100 years, the number of revolts and rebellions against the British Raj was continuously increasing. Okay, and you can say that one major revolt was seen in which year? One major revolt was seen in 1857. 1857 is it? Major revolt was seen. And after 1857 से लेकर, this is 1885 ना? So he said that between this period also we see, okay, a large number of revolts and rebellions against British Raj. Here also we see number of revolts and rebellions against the British Raj. 1857 तक तो था ही था. 1857 was a massive expression. सबसे बड़ा expression था किसी भी तरह के revolt का. And here also we see large number of revolt and rebellion. Now Lala Lajpat Rai says that the number of such revolts and rebellions after 1885, okay, was reduced. Okay, ये क्या होने लगा? The number of revolts and rebellions now was decreasing or reduced. अचानक से revolts और rebellions की संख्या क्या होने लगी? कम होने लगी. After 1885. Clear? This is the concept. That till 1885 we see revolts and rebellions against the British Raj. The number is continuously growing. And after the formation of Indian National Congress, the number of revolts and rebellions against the British Raj, okay, it starts declining. So the idea is, was the formation of Indian National Congress a part of British conspiracy? क्या Indian National Congress का बनना British conspiracy का नतीजा था? This is the question. That is the formation of Indian National Congress a part of British conspiracy. क्या British conspiracy का नतीजा है? And what he says? The founder is A.O. Hume. Founder कौन है Indian National Congress का? A.O. Hume. So why Hume gets ready to support a pan-Indian political party? What is the reason? Hume क्यों राजी हो गया कि वो इंडिया के लिए एक पैन इंडियन नेशनल पार्टी या पैन इंडियन पार्टी चाहता है? This is the question. It means that Lala Lajpat Rai is saying that, okay, INC was basically providing what? A safe, mild,
peaceful and constitutional outlet to the rising British content. Write this. Okay, read this. He raised question. He raised question behind the purpose of behind the purpose of purpose of okay uh, purpose of formation of INC. पहली चीज तो ये he raised question behind the purpose of formation of Indian National Congress. He raised question behind the purpose of formation of Indian National Congress. And write one more point. Okay, according to him, next point, according to him, INC was providing a safe, INC was providing a safe, mild, peaceful, and INC was providing a safe, mild, peaceful, and constitutional outlet. INC was providing a safe, mild, peaceful, and constitutional outlet for the rising discontent of Indian masses. For the rising discontent of Indian masses, right? INC was providing a safe, mild, peaceful, and constitutional outlook for the rising discontent of Indian masses. Clear? It's very simple. अब इस बात को कैसे समझे? सेफ, माइल्ड, पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक, यानी कि लोगों के अंदर जो गुस्सा आ रहा था, लोग क्या कर रहे थे? रिवोल्ट करने की जगह अपनी जो शिकायत थी वो किसके पास भेजते थे? आईएनसी के पास. एंड आईएनसी विल प्रॉमिस कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम ब्रिटिश अथॉरिटीज से बात करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. मेरी बात समझ गया ना? तो इनका ये कहना है कि आईएनसी एग्जैक्टली वही काम कर रही है, राइट? कि लोगों के अंदर गुस्सा है, अगर उस इश्यू को प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया तो वो किस में बदलेगा? रिवोल्ट एंड रिबेलियन. एंड व्हाट आईएनसी इज डूइंग? आईएनसी इज बेसिकली प्रोवाइडिंग अ सेफ, माइल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक. कहाँ कहीं पे भी डिसकंटेंट है तो उस ऑर्गेनाइज डिसकंटेंट को, इश्यूज को ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जो है दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, वहां से उठाया जाएगा और इससे लोगों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता था और रिवोल्ट और रिबेलियंस की संख्या क्या होती चली गई? कम होती चली गई. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाई दिस थियरी इज कॉल्ड सेफ्टी वॉल्व थियरी? अगेन सेफ्टी वॉल्व थियरी कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल लुक, दिस इज सपोज दिस इज अ प्रेशर कुकर. ये क्या है? प्रेशर कुकर. एंड देयर इज अ गैस बर्नर हियर. There is a gas burner here. Why it is called safety valve theory? There is a gas burner here, right? And in the pressure cooker, here we see what? A safety valve. यहाँ पे क्या होता है? Safety valve होता है. And when you will put on this gas burner, what will happen? मान लो इसमें आप you are cooking pulses here. What will happen? Putting the gas burner on, ठीक है? इसके अंदर जो प्रेशर बनेगा, this pressure will be released. How? When the pressure will be formed inside this pressure cooker, so this safety valve will allow this extra pressure what to release. It will allow this extra pressure what? A safe passage or out. ठीक है, safe passage यही तो है. Mild and safe. Look here, mild, safe, peaceful outlet in the same way. यहाँ पे तो this gas burner is what? This is colonial rule. ये क्या है? कॉलोनियल रूल. इससे क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज. दिस इज व्हाट? एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज. कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज. तो बाय दिस एक्सप्लॉयटेटिव कॉलोनियल पॉलिसीज, द डिसकंटेंट ऑफ द पीपल, दिस इज व्हाट? दिस इज डिसकंटेंट ऑफ द पीपल, डिसकंटेंट ऑफ मासेस. प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर बनने का मतलब क्या है? ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द मासेस. ये मतलब हो गया ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ द मासेस. अगर ये सेफ्टी वॉल्व नहीं होता तो प्रेशर कुकर ब्लास्ट करता. तो ब्लास्ट करने का मतलब क्या है? रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस. बट यहां क्या क्या कर रहा है? आईएनसी इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेफ्टी वॉल्व.
इसकी वजह से कुकर, प्रेशर कुकर ब्लास्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ? Blast means revolts and rebellions. Okay. So now the same concept previously we have discussed, that the formation of INC in 1885 is playing the role of a safety valve, and it is giving passage, safe passage, okay, to the discontent of the masses, and that's why the number of revolts and rebellions after 1885 has been reduced. The founder is A.O. Hume, and most importantly, during these 20 years, from 1885 to 1905, okay, achievement of Indian National Congress is very limited, very few. Okay, British government was not taking the demands raised by Indian Nation Congress very seriously. So this theory raises a doubt behind the formation of Indian Nation Congress. That was the formation of Indian Nation Congress a colonial propaganda? How Dufferin allowed A.O. Hume to be the founder of Indian Nation Congress? रिपन कब से कब था? 1882 to 1804. आपको पता है? What is the time for Ripon? I have already discussed with you. 82, 84. इसके बाद कौन आता है? Dufferin. And what is the time period of Dufferin? 1884 to 1888. तो ये भी एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है कि when INC was formed, who was the viceroy of India? So what will be the answer? Lord Dufferin. So how Dufferin allowed A.O. Hume? कैसे अलाउ किया? Might Dufferin and A.O. Hume have some consultations? इनके बीच में कुछ बातचीत हुई हो? शायद यही बातचीत हुई हो। ठीक है, कि आईएनसी बनाओ और लोगों का जो डिसकंटेंट है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अगर एड्रेस कर लेंगे तो रिवोल्ट और रिबेलियन नहीं होगा, बिकॉज दीज रिवोल्ट्स एंड रिबेलियंस okay were like challenges before the British rule. But the question is that this safety valve theory, do you agree with this safety valve theory? How many of you agree with this theory or not? Do you agree, yes or no? Do you agree with this safety valve theory? Do you also think that formation of Indian National Congress was a part of British conspiracy? देखो, it's a criticism and criticism are always welcome. ठीक है, हमारा नॉलेज ट्रेडिशन ही ऐसा है. एंड वाई दे आर क्रिटिसाइजिंग? बिकॉज वो भी देशभक्त है भाई, उन्हें लग रहा है कि हमारी कोशिशों का अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा है. दैट्स वाई दे आर क्रिटिसाइजिंग. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म. But the formation of Indian National Congress can better be justified by another theory. Okay, this theory cannot be justified. It is a part of criticism. लिख लो वहीं पे conclusion. This theory cannot be justified. Okay, it should be considered as a part of criticism. Criticism हमारी functioning को बेहतर बनाता है कि नहीं? Yes, right? So this theory cannot be justified. This should be considered as a part of criticism. This should be considered as a part of criticism. Okay. Instead, right? Instead, there is another theory which better explains. Instead, there is another theory which better explains. There is another theory which better explains the purpose, real purpose behind the formation of Indian National Congress. There is another theory which better explains the real purpose behind the formation of Indian National Congress. दूसरी theory which better explains the real purpose behind the formation of Indian National Congress, and this we need to understand. ये बात हमें समझने की जरूरत है. There is another theory, right? And what is that theory? तो देखो, that theory is called lightning conductor theory. Read this. That theory is called lightning conductor theory. Lightning conductor theory. This is another theory which better justifies the real purpose behind the formation of Indian National Congress. And what is that lightning conductor theory? That is very interesting. ठीक है, तो lightning conductor theory, first I will discuss the concept और last में theory बताऊंगा. देखो, what is lightning conductor theory? समझो इस बात को. 1858 में क्या हुआ है? In 1858, crown rule, British crown rule came, right? Crown rule came. This we all know. Clear? Before 1857, what was the outlook of educated Indians? Outlook of
educated Indians. Even during the revolt of 1857, what was the outlook of educated Indians? Okay, exactly, neutrality. Why they are maintaining neutrality? This we need to understand. Because जो educated class है वो old monarchical setup की तरफ नहीं जाना चाहे. Okay, they will support what? Liberal democratic ideas. They will not like to go to the old medieval system. And they were thinking that British were familiar with this, okay, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम. उनको अच्छा देखो, एक और, जैसे आज मैं शाम को एक लेक्चर भी रिकॉर्ड करूंगा, होपफुली एट 6:30 स्टार्ट करूंगा. दैट इज इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास एंड टाटा फैमिली, नॉट ओनली रतन टाटा, इंटायर टाटा फैमिली. कि जो टाटा फैमिली ने जो बिजनेस की फाउंडेशंस रखी वो किस समय में रखी बताओ? ब्रिटिश रूल ही था ना, कॉलोनियल रूल ही था ना. ओके, तो हाउ दे मेंटेन दिस बैलेंस, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. इससे आपका एक नया पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि कॉलोनियल रूल में कैसे ग्रोथ हुआ इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का. ठीक है ना? तो टुडे वी विल रिकॉर्ड इट एट 7 PM. तो अगर आप फ्री हो तो ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा. अदरवाइज आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो. नाउ व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट न्यूट्रलिटी. दे वर एक्सपेक्टिंग दैट ब्रिटिश क्या है, दे आर मोर प्रोग्रेसिव. वहाँ पे प्रोग्रेसिव लिटरेचर, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल आइडियाज, प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक थॉट्स. सो माइट बी दे विल बी पॉसिबल अंडर their leadership there will be some changes. उनको यही लग रहा है. But after some time they realized that their expectations are not true. British are not going to bring those changes. So what they did, what did this class of educated Indians did? एजुकेटेड इंडियंस के क्लास ने क्या करना शुरू किया? पहला, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ये भी किसने किया? एजुकेटेड इंडियंस ने. पता है आपको? ये सेकेंड चैप्टर था हमारा, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दे एक्सप्लेन्ड, दे एक्सप्लेन्ड with facts, with datas, that how British government is economically exploiting India. And they started promoting, okay, economic and political awareness among the masses. लोगों के अंदर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ाना शुरू कर दिया. सेकेंड, व्हाट दे डिड, यू ऑल नो दिस, RPS, regional political associations. From 1830s to 1880s, there is growth and development of regional political associations. Political associations will promote what? Political associations will promote, exactly, this will promote political awareness among masses. ये लोगों के बीच क्या promote करेगा? Political awareness. Okay, where these educated Indians who were the founders of RPAs, where they also trying to make the RPAs ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. क्या ये चाह रहे थे कि हमारी आरपीए ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो जाए? यस. याद करो, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मर्जर वाली कहानी याद आई? ठीक है. branches were opened in Bombay, branches were opened in Madras, the example of Indian League, the example of Indian Association. It means the founders and prominent members of RPAs were already making efforts. They were already making efforts to form an all India political organization. वो कोशिश कर रहे थे ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की. They were already making efforts. For example, Indian Association, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था दिसंबर 1883 में. तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होने का मतलब क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस होने का मतलब क्या है? कि आप चाहते हो कि आप नेशनल कैरेक्टर बनाओ. ठीक है. तो 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया? वी ऑल नो दिस. दिसंबर 1883 इंडियन एसोसिएशन ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस. Okay, and then again it decided that in December 1885 we will organize second all India conference. This shows the efforts made by these leaders to develop a pan India political organization. ये सब चाहते थे कि एक pan India political organization हो. मेरी बात समझ गया ना? सब चाहते थे. But what is the problem? Why they are not able to do so? ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे? Because British will not allow you to do so.
वैसा होने नहीं देंगे, बिकॉज ब्रिटिश नो दैट इफ देयर विल बी ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट विल हैपन, ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी होगी तो ये लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करेगी। जैसे हम इंडिया में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म मानते 1885 से हैं, वाई, यही तो रीजन है, ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी हमारे पास है। तो देयर वाज द फियर ऑफ ऑफिशियल सेपरेशन डन बाय ब्रिटिश, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, और गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफिशियल सेपरेशन गवर्नमेंट कैसे करती है, आप कोई पार्टी बनाओ और आपका जो प्रोग्राम हो, आउटलुक हो, वो थोड़ा एंटी गवर्नमेंट हो, कुछ उनकी पॉलिसीज को लगातार अपोज कर रहे हो, तो आपको रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी है। तो अगर आप ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे तो दो चीजें होंगी, ओके, देयर इज अ थ्रेट ऑफ ब्रिटिश ऑपरेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाएगा, आप मीटिंग्स नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप फंडिंग्स नहीं कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, मीटिंग्स बैन हो जाएंगी, तो आप काम कैसे करोगे बताओ, कर सकते हो काम? नहीं, क्योंकि पार्टी का काम ही होता है मीटिंग करना, लोगों से कनेक्ट होना, फंड कलेक्ट करना, अगर वो सीधे बैन हो जाएगा ऑन द नेम ऑफ सेडिशियस एक्टिविटीज, व्हाट यू कैन डू? So they were trying to do so, but they were unable to do so because of official suppression done by British. Because British government will not allow this. So write this point. Okay, they failed. Write this. They failed because because of, right, because of because of official suppression done by British. Because of official suppression done by British. British will never allow. British will never allow. British will never allow. Okay. The transformation of a RPA into all India political body. वो ऐसा करने ही नहीं देंगे. They will never allow the transformation of RPA into all India political body. They will restrict. They will put ban. That is official separation. They will not, never allow. They will restrict. They will put a ban. And that is what? Official separation. यही है official separation. Clear? This is official separation. Now what will happen? इसका मतलब ये लोग कोशिश कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू डू सो। और इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट सेशन में द मेंबर्स हुए देयर 72 जो थे, वो लोग कहीं ना कहीं आरपीएच से जुड़े हुए थे कि नहीं, सब आरपीएच से जुड़े थे। तो एक बड़ी मजेदार कहानी है अबाउट एओ ह्यूम। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टावियन ह्यूम, ही इज कॉल्ड एनलाइटेंड imperialist. We use a word for A.O. Hume. Read this, enlightened imperialist. रिपन को क्या कहेंगे हम? एनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट। मेयो को क्या कहेंगे? एनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्या कहेंगे? इनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट। मेरी बात समझ गया? इनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट। एंड देयर इज अ रीजन दैट वी आर सेइंग इनलाइटेंड, और प्लस हमने एक और वर्ड लगाया है, इंपेरियलिस्ट। व्हाई एओ ह्यूम इज एन इनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट? तो देखो, ये इंडियन सिविल सर्विसेज से जुड़ा हुआ है। तो सिविल सर्वेंट हमेशा किसका पक्ष रखता है बताओ? कल को आप सिविल सर्वेंट हो जाओगे तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, उसी चीज को डिफेंड करना पड़ेगा ना हमेशा, कि आप ही क्रिटिसाइज कर दोगे, पॉसिबल नहीं है। तो इनलाइटेंड इंपेलिस्ट मींस व्हाट? दैट एओ ह्यूम इज अ मेंबर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस, बट ही बिलीव्स दैट, वो क्या सोचता है, दैट इफ लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ इंडियन पीपल विल बी रिड्यूस्ड, सो दिस विल मेक अस कंफर्टेबल टू रूल ओवर इंडिया। अगर इंडियन लोगों का डिससेटिस्फेक्शन कम हो जाए, ठीक है, तो ब्रिटिश रूल को मेंटेन करना काफी आसान होगा। समझो इस बात को। रिवोल्ट एंड रिबेलियन होगा तो क्या होगा? डिसरप्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड यू विल डू व्हाट? सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट एंड रिबेलियन। उसमें क्या होगा? पैसा खर्च होगा, मिलिट्री एक्सपेंसेस। तो अगर हम क्या करें कि कुछ रिफॉर्म्स कर दें, ठीक है, ठीक है, लोगों के कुछ डिमांड्स को एड्रेस कर लें, तो इससे डिससेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, और डिससेटिस्फेक्शन कम होगा, सो इट विल बी इजियर फॉर ब्रिटिश टू एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर इंडिया। ओके, बट इन दिस प्रोसेस इंडियंस आर आल्सो बेनिफिटेड। इफ द ब्रिटिश विल ब्रिंग रिफॉर्म्स, हमें कुछ तो फायदा होगा ना। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग हिम व्हाट? इनलाइटेंड इंपेरियलिस्ट। तो वो जहां भी जाता था इंडियंस के बेटरमेंट की बात करता था, कि वो वी आल्सो वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन द लाइफ एंड कंडीशन ऑफ पीजेंट ट्राइबल। ऐसा लगता था जैसे कोई इंडियन लीडर बोल रहा, ठीक है, उसका टोन ऐसा ही था, ठीक है। और जहां भी कोई भी मीटिंग वीटिंग होती थी तो उसको बुला लेते थे इंडियन लीडर्स, कहते थे एओ ह्यूम भाई चले आओ,
इनविटेशन कार्ड चला जाता था, फिर आके वीआईपी चेयर पे बैठता था, उसको माला वाला पहनाते थे, स्पीच वगैरह देता था। ठीक है, तो उसको उसको आदत लगी हुई थी इंडियंस के पॉलिटिकल एसोसिएशन में जाने की और स्पीच देने की। तो 1883 का ईयर था, ईयर वाज 1883 एंड वेन्यू वाज कलकत्ता यूनिवर्सिटी, एंड इन कलकत्ता यूनिवर्सिटी ही वाज इनवाइटेड एंड ही वाज डिलीवरिंग a speech. Or while delivering the speech, he emphasized the need that Indians should have an all India political platform. उसने खुद ही कहा कि Indians must have an all India political platform. While delivering a speech, right, this 1883, while delivering a speech, he emphasized on the need, he emphasized on the need that Indians must have an all India political forum. Indians के पास all India political forum होना चाहिए. Year was 1883 and which viceroy was ruling? वायसराय कौन था? रिपन. रिपन था. ठीक है, तो रिपन रिपन का भी तो पॉलिसी यही था, रिफॉर्म्स लाओ और इंडियंस को क्या करो, इंडियंस के डिससेटिस्फेक्शन लेवल को क्या करो, कम करो. ये बात स्पीच यहाँ कही इन्होंने. एंड आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन? ओके, ही वाज कंटिन्यूअसली इनवाइटेड, बार बार इसको इनवाइट किया जाता था. उसके बाद इसको यहाँ भी इनविटेशन मिला हुआ था, दिसंबर 1885, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहाँ भी इनवाइट था एओ ह्यूम. इसको भी नहीं पता था कि मैं कांग्रेस का फाउंडर बनने वाला हूँ. ठीक है, हमने बुला लिया उसको. ठीक है, कहा स्पीच दो. स्पीच देते देते फिर बोल पड़ा वो, का इंडियंस मस्ट हैव एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोरम. और हम लोग तैयार थे पहले से ही. ठीक है, कि अगली बार जैसे ही ह्यूम बोलेगा साइन करवा लेना है डॉक्यूमेंट इससे. मेरी बात समझ गए? यू आर द फाउंडर. तो जैसे ही इसने कहा कि वी मस्ट हैव एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोरम सो दैट द डिमांड्स ऑफ इंडियंस कुड बी कैटर्ड इन अ बेटर वे, डॉक्यूमेंट लेके आ गए हमारे अर्ली नेशनलिस्ट. कहा साहब हमने डॉक्यूमेंट पहले बना दिया, आप साइन कर दो और आप बन जाओ फाउंडर. वो फंस गया. ठीक है, साइन कर दिया उसने. आप सोच नहीं रहे, अचानक से बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस. हम पहले से तैयार थे. जो पहले के आरपीएस थे वो सब फाउंडर कौन थे? इंडियंस थे. ठीक है, तो जैसे ही आप ऑल इंडिया पॉलिटिकल बॉडी बनाओगे देयर आर चांसेस दैट ब्रिटिश विल सप्रेस, क्योंकि वो ऐसा करते थे. यहाँ पे क्या था, डॉक्यूमेंट आपने पहले से तैयार रखा है, एओ ह्यूम भाई साहब को स्पीच देने की आदत पड़ी हुई है. ठीक है, माहौल बना रहे हैं वो. जैसे ही उन्होंने बोला हमने डॉक्यूमेंट साइन करा लिया, एओ ह्यूम इज द फाउंडर एंड फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी. वो भी कंफ्यूज हो गया, अब मैं करूं क्या. बार बार स्पीच में बोल रहा था कि इंडियंस मस्ट हैव ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी, एंड इन दिस वे एओ ह्यूम डिड व्हाट? एओ ह्यूम became the founder of Indian National Congress on 28 December 1885. He was also unaware that on 28 December Indian National Congress will be formed. ये उसको भी नहीं पता था. हमने चालाकी से उससे डॉक्यूमेंट साइन करा लिया. अब तो वो फाउंडर बन गया ऑल इंडियन पॉलिटिकल पार्टी का. वापस लौट के गया तो डफरिन ने कॉल किया उसको, कहा बेटा शाम को मिलो तुम चाय पीने, बहुत स्पीच दे रहे हो तुम, अभी क्या करके आए हो तुम? ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोरम बना दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यू बिकम द फाउंडर. तो डफरीन को समझाया उन्होंने, कहा भाई घबराने की जरूरत नहीं है, आई एम द फाउंडर, आई एम द जनरल सेक्रेटरी, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, आई विल गेट ऑल द अपडेट्स कि क्या चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में. ओके, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमें कोई थ्रेट नहीं है. देयर वर ओनली 72 रिप्रेजेंटेटिव्स, ओनली 72 रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड दिस कॉन्फ्रेंस. डफरीन ने कहा अच्छा, कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन. कहा अच्छा, डरने की जरूरत नहीं. कहा ना, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस में. देन डफरिन सेड व्हाट? कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज अ प्रिलिम्स फैक्ट, राइट दिस. ओके, राइट दिस. ओके, consultations between AO Hume and Dufferin, read this point, consultations between AO Hume and Dufferin, consultations between AO Hume and Dufferin. एओ ह्यूम और डफरिन के बीच में क्या हुआ? कंसल्टेशंस, बातचीत, कंसल्टेशंस बिटवीन एओ ह्यूमन एंड डफरिन. तो ह्यूम सजेस्टेड व्हाट? राइट दिस. ह्यूम सजेस्टेड, ह्यूम ने क्या बताया? कुछ तो बताना पड़ेगा ना बॉस को. ह्यूम ने क्या बताया? राइट, पॉइंट वन, ह्यूम सजेस्टेड दैट, okay, he is the founder, right? Hume suggested that Hume is the founder, Hume is the first general secretary, so there is no need to worry from Indian National Congress. Hume suggested that he is the founder, he is the first general secretary, so there is no need to worry, no need to worry. का इससे डरने की जरूरत नहीं.
No need to worry, because we can easily get what? All updates of INC, all updates of INC, programs of INC, ठीक है? Every update we can get easily, ठीक है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन से डरने की क्या जरूरत है? सारे अपडेट्स तो हमें मिलते रहेंगे. गॉट इट? ओके. एंड ह्यूम के पास ये भी आइडिया था, राइट? सेकंड पॉइंट, ह्यूम आल्सो सजेस्टेड दैट, if Indians will have an all India political forum, so they will raise their political demands from this political forum. Obviously, if Indians will have all India political forum, so they will raise their demands from this political forum. If Indians will have an all India political forum, so they will raise their demands from this political forum. They will raise their demands from this political forum, right? And we can prevent, and we can easily prevent reoccurrence of massive revolts like revolt of 1857. We can easily prevent reoccurrence of massive revolts like revolt of 1857. ठीक है? रिवोल्ट क्यों होता है? अगर लोगों के डिससेटिस्फेक्शन का आपको पता नहीं लगा, अंदर ही अंदर गुस्सा लोगों के मन में है, अचानक वो किस दिन फूट पड़ेगा, राइट? सो वी कैन इजिली प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ एनी इवेंट लाइक रिवोल्ट ऑफ 1857. ये बात सुना? डफरिन ने कहा ठीक है, इट्स ओके. और वैसे भी इन फर्स्ट कॉन्फ्रेंस द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वाज 72. ठीक है? तो डफरिन थॉट दैट, राइट? डफरिन सेड दैट कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन. का बहुत छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन, वी डोंट नीड टू वरी. कांग्रेस क्या है? इट्स अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन. कांग्रेस इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस. नाउ in this entire process, do you think that our early nationalists are more wise in this context? Early nationalists ने क्या किया? Very smartly they did what? Okay, they selected एओ ह्यूम as a founder. ठीक है? प्लान किसी और का था, एओ ह्यूम को फाउंडर बना दिया गया. गॉट इट? जैसे लाइटनिंग कंडक्टर थियरी मीन्स व्हाट? सिंपली वी कैन एक्सप्लेन इट लाइक दिस. लाइटनिंग कंडक्टर, यहाँ पे लिखो लाइटनिंग कंडक्टर थियरी. व्हाट इज दिस लाइटनिंग कंडक्टर थियरी? नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस लाइटनिंग कंडक्टर थियरी. क्या है ये लाइटनिंग कंडक्टर थियरी, राइट? तो व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज लाइटनिंग कंडक्टर? स्कूल में पढ़ा होगा, you must have read about this. Okay, on the top of the building क्या करते हैं हम? Right, a rod, metallic rod, right? For what purpose? Okay, it provides a path, conductive path for lightning, and it protects the building from any kind of damage. यही होता है ना lightning conductor, right? Lightning conductor, suppose this is building. On the top of the building, this metal conductor will do what? This metal will prove as lightning conductor, because this will provide a conductive path to lightning. अगर इस पे बिजली गिरेगी तो इसको क्या करेगा? एक पैसेज दे देगा, रास्ता दे देगा. लाइटनिंग को क्या करेगा? got it? Okay, conductive path to the lightning, and this will prevent the building, and this will prevent the building from any kind of damage. This will prevent the building from any kind of damage. ठीक है? इससे बिल्डिंग को किसी तरह का डैमेज नहीं होगा. दिस विल प्रिवेंट द बिल्डिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डैमेज. तो अर्ली नेशनलिस्ट ने क्या किया? दे स्मार्टली यूज्ड एओ ह्यूम एज दिस लाइटनिंग कंडक्टर. सो एओ ह्यूम इज व्हाट? लाइटनिंग कंडक्टर. एओ ह्यूम क्या है? लाइटनिंग कंडक्टर. और व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग क्या है? Lightning will damage the building. So what is lightning? Oppression, official suppression by colonial rule. अगर आप कुछ भी बनाओगे तो वो क्या कर देंगे? बैन कर देंगे. Read this. So lightning means what? Official suppression. Official suppression by British government. And what is this building? This building is what? Right? Okay. Growth of Indian nationalism and formation of
ऑल इंडिया पॉलिटिकल फोरम, यही है बिल्डिंग. ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टी इज द बिल्डिंग. नाउ यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट अगर हमने lightning conductor is Hume. Lightning means official suppression by British, and this building indicates what? Growth of Indian nationalism and need for a all India political forum. Need for a all India political forum. अब सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर यहाँ पे फाउंडर एओ ह्यूम की जगह दादा भाई नौरोजी होते, फिरोज शाह मेहता होते, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी होते, तो क्या होता? लाइटनिंग रॉड नहीं होता. लाइटनिंग क्या करती? ऑफिशियल सेपरेशन से उस फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल फोरम को ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर देती? सप्रेस कर देती. गॉट इट? So our early nationalists smartly used A.O. Hume as the lightning conductor. They made A.O. Hume founder and first general secretary of Indian National Congress. Okay, and in this way they successfully prevented, right, this in this way they successfully prevented. Early nationalists smartly used A.O. Hume as the lightning conductor. Early nationalists smartly used A.O. Hume as a lightning conductor, and in this way they successfully prevented, and in this way they successfully prevented, and in this way they successfully prevented, okay, the official suppression of INC in its nascent stage. They will successfully prevented the official suppression of INC from the British rule in its nascent stage. I hope you understand the meaning of nascent stage, right? They successfully prevented the official suppression of Indian National Congress by British government in its nascent stage. Okay, they successfully prevented official suppression of Indian National Congress, okay, by British rule in its nascent stage. अब आप समझ पाए? ठीक है, एओ ह्यूम की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी नहीं थी. वेरी सक्सेसफुली व्हाट वी डिड, ओके, वी मेक अ प्लान, ओके, एंड वी डिसाइडेड टू चूज एओ ह्यूम एज द फाउंडर. नाउ आईएनसी वाज फॉर्म्ड. ठीक है, and after the formation of Indian National Congress, when we study the important developments during these 20 years, okay, we need to know that from 1885 till 1905, okay, INC was formed here. What are the important demands raised by Indian National Congress? This we need to understand. Important demands raised by Indian National Congress. Indian National Congress कौन से डिमांड कर रही है? This we need to understand. तो पहली डिमांड क्या करी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने? समझो. ठीक है, पॉइंट क्या बताया था आपको? They believed in British sense of justice. फर्स्ट फेज में कौन डोमिनेट कर रहा है? मॉडरेट्स. हु इज डोमिनेटिंग? मॉडरेट्स. मॉडरेट्स बिलीव्ड इन व्हाट? ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस. इस बात में वो बिलीव करते थे, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, एंड दे बिलीव दैट वी विल गेट पॉलिटिकल ट्रेनिंग अंडर ब्रिटिश. हमें क्या करना है? ब्रिटिश के अंडर पॉलिटिकल ट्रेनिंग लेना है. सो व्हाट दे विल डू? डिमांड उनका क्या होगा? गिविंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस. आर दे डिमांडिंग टू अप्रूव ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया? नो. They are simply asking for what? Giving political representation to the Indians. Write this. This is their demand. Write this. Giving political representations to Indian people. Giving political representations to Indian people. ठीक है, और ये political representation कैसे मिलेगा उस टाइम में? ओके, सो देर आर सम टेक्निकल टर्म्स. जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बताऊंगा तो आप समझोगे इसको. व्हेन गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल विल बी एक्सटेंडेड. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था? गवर्नर जनरल की काउंसिल में कुछ मेंबर्स होते थे. तो दो चीजें हो सकती हैं. ओके, व्हाट डू यू डू? एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल. एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल मींस ओके, इंक्रीजिंग द सीट्स, मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दो. एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल. और उसमें क्या करो? नंबर बढ़ाओ और इंडियन मेंबर्स को क्या करो? लेके आओ. तो डिमांड क्या हो जाएगी? बताओ कि एक्सपेंशन. राइट दिस. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगा? राइट दिस. ओके, डिमांड फॉर expansion or extension of
डिमांड फॉर एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिमांड फॉर एक्सपेंशन ऑफ गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहा कि गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को क्या करो, एक्सटेंड करो, न्यू मेंबर्स को लेके आओ, नए मेंबर्स ये क्या होने चाहिए, इंडियन मेंबर्स होने चाहिए। सो दिस इज द डिमांड, सो दे आर आस्किंग फॉर ओके इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये डिमांड है। अच्छा, केवल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग करेंगे और दे विल आल्सो मेक डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज। Yes. So read this. They also raise demand for, read this, Indianization of services. Indianization of services. Indianization of services. ठीक है, इसकी भी डिमांड करें। ठीक है। After this, there were corporations at that time, and in those corporations, ब्रिटिश ने क्या किया था, नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स वाज हाई और इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या क्या होती थी, लो। तो व्हाट आईएनसी विल डिमांड कि नॉमिनेटेड मेंबर्स की संख्या कम करो और इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाओ। मतलब समझ पा रहे हो ना, नॉमिनेटेड ब्रिटिश विल नॉमिनेट हु, those who will be okay, you can say that support British policy. So write this point, write this point, write this, demand to increase, demand to increase the number of elected members in the council, the demand to increase the number of elected members in the council, इसकी भी डिमांड करें, डिमांड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द काउंसिल। ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल, प्रोविंशियल काउंसिल्स की बात की, फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल्स, और प्रोविंशियल काउंसिल्स में भी मुद्दा क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल्स, इट मींस increasing the number and adding Indians as the member of the council, expansion of the council, this is also one important demand। ठीक है, expansion of the council। ठीक है, right, next point, okay, separation of powers, right, separation of powers, separation of powers, इसकी भी डिमांड करी, separation of powers, okay, executive and legislative powers, इसको क्या करना है, सेपरेट करना है, separation of powers, executive and legislative powers, right, next point, okay, making judiciary more transparent, जुडिशरी को ज्यादा क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, मेकिंग जुडिशरी मोर ट्रांसपेरेंट, जुडिशरी मोर ट्रांसपेरेंट, ओके, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, ओके, एग्रेसिव पॉलिसी टुवर्ड्स नेबर्स मस्ट बी एंडेड, याद है लॉर्ड लिटन अफगान वॉर, एग्जांपल बताया था आपको, एग्रेसिव पॉलिसीज टुवर्ड्स द नेबर्स मस्ट बी, ओके, ended, aggressive policy towards the neighbors must be ended, right, next point, British government must provide a responsible and responsive administration, this is also one important demand, British government must provide responsible and responsive administration, must provide responsible and responsive administration, got it, right, next point, drain of wealth should be stopped, drain of wealth should be stopped, drain of wealth should be stopped, right, next point, military expenditure cut, क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, आपको रिलेट कर पा रहे हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट, अपने मन से सोच के रखना है, मतलब लिखना है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद से लिख सकते हो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कट, क्या लैंड रेवेन्यू रेट्स को कम करने की डिमांड होगी, यस, राइट दिस, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेट्स, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेट्स, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू रेट्स, ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्ट टैक्स का मुद्दा बहुत पहले से चला रहा है कि नहीं, तो एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, ये मुद्दा गांधी भी उठाएंगे सीडीएम में, राइट दिस, एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स, एबॉलिशन ऑफ
salt tax. Right, next point. Okay, read this. British government must give support to agriculture, giving support to agriculture, right? Giving support to industries, giving official support to industries, जैसे आज की गवर्नमेंट करती है. We give official support to agriculture industries. So giving official support to industries. Right, next point. Okay. On welfare activities like health, education, sanitation, the government should spend more funds on, right, uh, welfare activities like education, health, and sanitation. The government should spend more fund. Right, next point. Protection of civil rights and individual rights of the people. Protection of civil rights and individual rights of the people. Protection of, okay, civil rights and individual rights of the people. Got it? Now there can be many more points. अब आप समझ गए ना? Okay. जितने भी issues थे, all the issues will be raised by Indian National Congress. But the problem is what? Now देखो, in these 20 years, what British expected? कि Indian National Congress but rubber stamp की तरह रहेगी. But it did not happen. After the formation, after 2 or 3 years, 4 years, what we see? That Indian National Congress started addressing all the issues of economic exploitation of Indian people, all the issues of administrative exploitation of Indian people. Now British government's approach. देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे जैसे अपने डिमांड्स को बढ़ाती चली जाएगी और इसके डिमांड्स, किसके डिमांड्स को एड्रेस करेंगे? पॉपुलर मासेस के डिमांड्स को एड्रेस करेंगे. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का आउटलुक इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए क्या होता चला जाएगा? क्रिटिकल. So initially Dufferin is considering Indian National Congress as a microscopic organization. But what we see after 3 year, 4 year, INC will become popular among the masses. और देखो, लीडर या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मान लो आप लोगों ने मिलकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई और उसमें हम 50 मेंबर्स हैं. ध्यान रखो, हमारी बात को कोई सीरियसली नहीं लेगा. लेकिन जैसे ही 50 लाख हो जाएंगे हमारे साथ लोग, 50,000 हो जाएंगे, तो क्या होगा? People will start taking us seriously. The government will start taking us seriously. So the strength of a political party is what? Popular support of the masses. जो 1885 में तो नहीं था, वो भी 28 दिसंबर को. 1886, 87, 2-3 साल लगेंगे ना. एंड व्हेन आईएनसी विल स्टार्ट गेनिंग पॉपुलैरिटी, और आज की तरह तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स थे नहीं, बात को पहुंचाने में आपको 3-4 साल लग सकता है. So when the people will become familiar that we have an all India party and INC will get popular support of the masses, INC will start gaining popularity among the masses. INC start raising all the issues of colonial exploitation. And when INC will start raising all the issues of colonial exploitation, basically INC is representing what? Growth of Indian nationalism. And now asking the question from the British government कि reform लेके आओ. Now the British government approach will start becoming more and more critical towards Indian National Congress. And ये अप्रोच क्या हो जाएगा? जैसे 1905 में कर्जन क्या कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, कर्जन says that Indian National Congress is tottering to its fall and one of my final ambitions while in India is to assist it in its peaceful demise. आसान भाषा में समझो, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल. जैसे मान लो कि थोड़ा इंटॉक्सिकेशन के बाद आदमी लड़खड़ा के चलने लगता है, उसे एक धक्का देने की जरूरत होती है, वो गिर जाएगा. बात कुछ वैसी है. कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल. इसका मतलब कांग्रेस इज नथिंग, वी डोंट टेक कांग्रेस सीरियसली, कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, कांग्रेस इन द ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन. एंड इंडिया में मैं क्या करूंगा? मैं कांग्रेस का अंतिम संस्कार करके जाऊंगा, ये कह रहा है कर्जन. कांग्रेस इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माय फाइनल एम्बिशन इन इंडिया इज टू असिस्ट इट इन इट्स पीसफुल डेमाइज. कह इसका अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा मैं इंडिया से. आप ये बताओ कि अगर कांग्रेस ब्रिटिश ऑफिशियल प्रोपेगेंडा का नतीजा होती तो कर्जन इतना बुरा भला कांग्रेस के बारे में क्यों बोलता? बताओ क्यों बोलता कर्जन? अगर कर्जन 1905 में ये कह रहा है
if the outlook of Curzon is critical, it means that INC is on its right track. अगर ब्रिटिश तारीफ करते इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो हम मानते कि कांग्रेस रॉन्ग ट्रैक पे है, बट अभी क्या हो रहा है, ब्रिटिश आउटलुक इज क्रिटिकल टुवर्ड्स इंडियन नेशनल कांग्रेस, which shows that Congress was on its right track. Got it? So this is the point here. Okay, so right here, this point also you can write here, that gradually the British outlook towards Indian National Congress will start becoming more and more critical. Gradually, British outlook towards INC will start becoming more and more critical. Gradually, British outlook towards Indian National Congress will start becoming more and more critical. ठीक है, gradually British outlook towards Indian National Congress will start becoming more and more critical. कितना आसान है, वो आउटलुक धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, क्रिटिकल होता चला जाएगा. इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिटिकल. क्लियर? It shows that INC was on right track. It was catering to. It shows that INC was on right track. It was catering to the needs and aspirations of Indian people. It was catering to the needs and aspirations of Indian people. Example, right? Curzon's statement. Example, Curzon's statement. Curzon का statement क्या है? Curzon statement. Write the statement. A statement is, right, Congress is tottering to its fall. Congress is tottering to its fall, and one of my final ambitions, and one of my final ambitions while in India, while in India, is to assist it in its peaceful demise. And one of my final ambitions while in India is to assist it in its peaceful demise. This is a statement of Curzon. ये भी पूछा जाता है प्रीलिम्स में, किसने कहा था? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइजेशन किसने कहा था? डफरिन ने. ये स्टेटमेंट किसका है? कर्जन का. सपोज इन मेंस यू वांट टू राइट द स्टेटमेंट, मेंस में आप स्टेटमेंट को लिखना चाहते हो, तो हाउ यू विल राइट? विल यू राइट द कंप्लीट सेंटेंस? नो. In mains, if you want to quote, or in essay if you want to quote, so you will quote like this. ऐसे quote करना. Curzon is, sorry, Congress is tottering. Congress is tottering. Then dot dot dot, and lastly you will reiterate what? Peaceful demise. अगर इससे वगैरह में कुछ स्टेटमेंट कोट कर रहे हो, these are the popular statements. तो जो प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है तो कितना ही पॉपुलर होगा. इतना डिटेल में हम स्टोरी फॉर्मेट में क्यों पूछ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. अब यूपीएससी का क्वेश्चन आ ही ऐसे रहा है. दे विल कनेक्ट टू थीम्स टुगेदर. तो व्हेन until unless you are not able to grasp the essence of any theme, it will become very difficult to write. मेरी बात समझ गया ना? जब आप समझोगे तो in your own words you can write few points very easily. Got it? This is Indian Nation Congress. Now do you understand lightning conductor theory? अब समझ में आया? Which theory better explains the formation of Indian Nation Congress? Right? Lightning conductor theory. Okay? Early nationalist, ये हम उनकी स्मार्टनेस थी कि दे स्मार्टली यूज्ड ह्यूम एज द लाइटनिंग कंडक्टर. बिकॉज अगर आप कांग्रेस के फॉर्मेशन पे ही क्वेश्चन मार्क लगा दोगे तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ठीक है, अब मान लो कि आप कांग्रेस के सपोर्टर नहीं, मान लो, तो ये कांग्रेस भी वो कांग्रेस नहीं है. तब से लेकर अभी तक कांग्रेस में बहुत बदलाव हुए हैं. इन पोस्ट इंडिपेंडेंस आई विल डिस्कस. ओके, कि पार्टीज में डेवलपमेंट या स्प्लिट कैसे हुआ. ठीक है ना, विल डिस्कस दैट. नाउ we are coming to the next part, that is within these 20 years from 1885 to 1905, 1885 से लेकर 1905, देखो क्या है, गांधी
okay, was having the opinion that once India will get independence, so the political party by the name of Congress, okay, must be dissolved. गांधी ने सीधे सीधे ये कहा था कि आजादी मिलने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या करनी चाहिए, ये नाम डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. Because Indian National Congress and its achievements are like a heritage of our Indian national movement. But if the same name will continue, if the same party will continue, there are chances that this is not promotion of free and fair election. क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, तो जैसे ही ये पार्टी इलेक्शन में आएगी, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले कई सालों तक ये लगातार इलेक्शंस जीतती चली जाए. तो ये क्या मिल जाएगा, एक्स्ट्रा पॉलिटिकल एडवांटेज. दैट्स वाई गांधी सेट कि ये नाम डिसकंटिन्यू होना चाहिए. ये तभी उन्होंने कहा था. ठीक है ना, ये चीज है. चलिए, नाउ वी आर कमिंग टू द सेकंड पार्ट, दैट डिमांड्स यू ऑलरेडी हैव अंडरस्टूड. डिमांड्स तो आपने समझ लिया. नाउ अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. आई हैव टोल्ड यू अर्लियर द अचीवमेंट्स वेर लिमिटेड अचीवमेंट्स. द अचीवमेंट्स वेर लिमिटेड अचीवमेंट्स. और इसी लिमिटेड अचीवमेंट प्लस moderates a strategy of 3P. Due to this, extremists were critical. इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, दे वेर क्रिटिकल टू आईएनसी. वो आईएनसी से नाराज थे, खफा थे. ड्यू टू लिमिटेड अचीवमेंट्स प्लस देयर स्ट्रेटजी ऑफ 3P, दैट दे वर बिलीविंग इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, इसलिए नाराज थे. और लिमिटेड अचीवमेंट्स क्या है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट फ्यू पॉइंट्स हियर विद इन दीज 20 years. एक अचीवमेंट है आईसीए 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक. इसको आगे डिस्कस करेंगे. आईसीए 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसको हम डिस्कस करेंगे इन द टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, राइट, लेटर. IC 1892, right? Second, okay. Read this. ICS exam conducted in India. ये हुआ इनके कोशिशों से. ICS exam in India. Right. Third point. Okay. British set up a commission in 1895. British set up a commission in 1895, and the commission is known as Welby Commission, right, on Indian expenditure. British set up a commission. ये prelims का fact हो सकता है. 1895, British set up a commission, and that is Welby Commission on Indian expenditure. British set up a commission in 1895, that is Welby Commission on Indian expenditure. ठीक है. क्यों वेल्बी कमीशन बनाया ब्रिटिश ने, बिकॉज आईएनसी वाज डिमांडिंग इकोनॉमिक ड्रेन रोको, एक्सपेंडिचर को क्या करो, कम करो. सो दे फॉर्म दिस कमीशन, दैट इज वेल्बी कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर. ठीक है. दीज आर अ फ्यू अचीवमेंट्स. अब आप बताओ, आपकी डिमांड्स कितने ज्यादा हैं, अचीवमेंट्स क्या है, द अचीवमेंट्स आर वेरी फ्यू. सो ऑब्वियसली देयर विल बी डिससेटिस्फेक्शन. प्लस आपके ये अचीवमेंट है कब, व्हेन यू आर फॉलोइंग द मेथड ऑफ 3P, राइट, प्रेयर, पिटीशन, पीसफुल प्रोटेस्ट की पॉलिसी. ये अचीवमेंट इतना कम तब है व्हेन यू बिलीव इन ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस. इट मींस दैट ब्रिटिश वर नॉट गिविंग प्रॉपर अटेंशन टू द इंडियन पॉलिटिकल डिमांड्स. इससे क्या बढ़ेगा, डिससेटिस्फेक्शन. और डिससेटिस्फेक्शन से क्या होगा, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म. ओके, उससे होगा डिससेटिस्फेक्शन. सो राइट दिस पॉइंट. ओके, ड्यूरिंग दीज 20 years ब्रिटिश गवर्नमेंट was not giving proper attention to the Indian political demands. During these 20 years, the British government was not giving proper attention. Okay, during these 20 years, British government was not giving proper attention to the Indian political demands. British government was not giving proper attention to the Indian political demands, and as a result, and as a result, and as a result, dissatisfaction among Indian masses will grow. Dissatisfaction among Indian masses will grow,
and this will further promote dissatisfaction among Indian masses will grow, and this will further promote the growth of Indian nationalism, and this will further promote the growth of Indian nationalism. ठीक है ना? और जब ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म होगा तो कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या उस ग्रोथ को रोकने की कोशिश करेगी? यस, this will promote the growth of Indian nationalism. Now we are entering into the next phase, right? Curzon. Curzon. Now we will discuss some important points about Curzon here. ठीक है ना? Curzon. Curzon in India was from 1899 to 1905. ठीक है ना? So Curzon is known for his administrative works, right? Plus, he is also known for one more reason, and that is what? The growth and suppression, suppression of growth of Indian nationalism. He also tried to do this. He also tried to suppress the growth of Indian nationalism. ये suppress करने की कोशिश करेगा. He will try to suppress the growth of Indian nationalism. Year is what? 1899. Congress कब बनी है? 1885. So 1885 to 1899, how many years have passed? Almost 14 years. And in this 14 year, Congress was successful in promoting growth of Indian nationalism. Now Curzon is determined to what? Crush. Curzon is determined to crush, growth of Indian nationalism. And due to this, he will take some important decisions. He will take some important administrative decisions. And what are those important administrative decisions? Write this. कौन से administrative decisions लिए? Right, first is Calcutta Corporation Act 1899. These informations can be important for your prelims exam. ठीक है, ध्यान रखना. कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ओके, 1899. कलकत्ता कॉरपोरेशंस. याद आया लॉर्ड रिपन. रिपन जब आया था तो क्या किया था उसने? लोकल बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज, इनको बनाने की बात करी थी. अर्बन लोकल बॉडीज की बनाने की बात की थी. एंड अर्बन लोकल बॉडीज में यहाँ क्या आ जाएगा? कॉर्पोरेशन इज दैट अर्बन लोकल बॉडी. समझो इसमें क्या मुद्दा है. वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिपन. रिपन ने क्या कहा? अर्बन लोकल बॉडीज बनाने की बात की. कॉर्पोरेशन इसी का एग्जाम्पल है. एंड इन दीज कॉर्पोरेशंस, ओके, two types of members were included. Type 1 were nominated members and type 2 were elected members. ठीक है, ये रिपन के टाइम से ही चला आ रहा था. Nominated members and elected members. Indian members. These are Indian members who are nominated, who are elected in the corporations. क्यों? क्योंकि वो बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि लोकल लेवल पे क्या चैलेंजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, एंड दे विल बी एबल टू स्पेंड द फंड अकॉर्डिंगली. ठीक है ना? दिस इज कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन. कर्जन ने क्या किया? व्हेन कर्जन केम, अच्छा बताओ, कॉर्पोरेशन में अगर इंडियन मेंबर्स हैं, ओके, इट मींस दे आर पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? एंड दिस पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन विल प्रोमोट व्हाट? द ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. ठीक है, आप और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे. मेरी बात समझ गया ना? अपने और ज्यादा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की मांग करोगे. एंड कर्जन वाज नोइंग दिस. इंडियन के बारे में जानता था. दिल मांगे मोर, दे बिलीव इन दिस. तो कर्जन ने क्या किया? कर्जन टुक अ डिसीजन. व्हाट इज द डिसीजन? द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स विल बी इंक्रीज्ड एंड द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स विल बी रिड्यूस्ड. इससे क्या होगा? कॉर्पोरेशन पे ब्रिटिश कंट्रोल को सेंट्रलाइज किया जा सकेगा, टाइटन किया जा सकेगा, और इंडियंस के मोटिवेशन को कम कर सकते हो आप. मेरी बात समझ गया ना? सो दिस वाज एन अटेम्प्ट. सो राइट हियर व्हाट कर्जन डिड, राइट? कर्जन right increased the number of nominated members and reduced the number of elected members. Okay, increasing the number of nominated members, okay, and reducing the number of
इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स के नंबर को रिड्यूस कर देना. नाउ व्हाट कर्जन डिड, he made the structure of corporations more democratic or less democratic, less democratic. So less democratic क्या है, suppression of Indian nationalism. So read this. Okay, we see that Curzon made the structure of corporations less democratic, less democratic. Structure of corporations less democratic. ये क्या है इसमें? Structure of corporations he made it less democratic. ठीक है? That's important point. Right, next point. Okay, next example. Right. Indian Universities Act 1905. इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905. पहले भी बताया था आपको इन द एजुकेशन टॉपिक, इन डिटेल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, 1904 सॉरी 1905. तो देखो, बेसिकली दिस इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट इज रिलेटेड टू educational reforms introduced by Curzon. Particularly, it is related to Calcutta University. But okay, we see एक इसके लिए बनी थी कमेटी बनी थी, तो पर्टिकुलरली कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए था, बट इसके रिकमेंडेशंस अप्लाई हो जाएंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज पे भी. और व्हाट इज द बेसिक पर्पस, यहाँ पे क्या पढ़ना है? बाय दिस एक्ट द गवर्नमेंट डिड व्हाट, will tighten its control over administration, centralize its control over administration of universities. मेरी बात समझ गया ना? और ऐसा करके पर्पस क्या था? स्टूडेंट्स को रोकना. कहाँ जाने से रोकना? मूवमेंट्स में जाने से रोकना. मेरी बात समझ गया ना? एंटी ब्रिटिश कुछ भी अगर है उसमें पार्टिसिपेशंस को रोकना. और हमें पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये क्या होते हैं? दे आर इंपॉर्टेंट सेंटर्स for okay any movement or the growth of nationalism. So write this point. Okay, the main purpose here was to tighten, because in details हमने education वाले में discuss कर लिया था. So right, the main purpose here was to tighten the government's control on, tighten the government's control on, the main purpose here was to tighten the government's control on administration of, on administration of Indian universities, to maintain its stricter control Indian universities. ठीक है, ठीक है. और एक पॉइंट लिख लो, टू डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन यूथ इन पॉपुलर मास मूवमेंट्स. दिस वाज आल्सो वन रीजन टू डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ ओके इंडियन यूथ, टू डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन यूथ ओके इन पॉपुलर मास मूवमेंट्स. ठीक है ना? नाउ what about Curzon? Curzon was not an enlightened imperialist. ये enlightened imperialist नहीं था. He was a strict imperialist. He was a strict imperialist, or you can say that okay hardcore imperialist था. Okay, he was a strict imperialist or hardcore imperialist. So whatever the policy he will introduce, there will be two purposes. उसका दो पर्पस होगा. पहला पर्पस क्या होगा? राइट, टू मेंटेन दिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट परमानेंट इन इंडिया. दूसरा पर्पस क्या होगा? ग्रो सपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. ठीक है ना? तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख सकते हो, देयर विल बी टू पर्पस बिहाइंड हिज पॉलिसीज. टू पर्पसेस बिहाइंड द पॉलिसीज ऑफ कर्जन. Two purposes behind the policies of Curzon. Purpose 1, to make the colonial structure permanent in India. To make the colonial structure permanent in India. Colonial structure को इंडिया में permanent बनाना. To make the colonial structure permanent in India. And second is, right, to suppress the growth of nationalist feelings and sentiments in India. There are two purposes. To suppress the growth of nationalist feelings and sentiments in India. दो पर्पस हैं इसके. यहाँ पे 2 points we have already discussed, right? Third point is, right, partition of Bengal. This is the third point, and this topic we have to discuss in detail. Partition of Bengal. And write one point here, that is Curzonian miscalculation. ये क्या था? It was Curzonian miscalculation. How it was a Curzonian miscalculation, I will discuss. Partition of Bengal was a Curzonian miscalculation.
आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, दिस पार्ट इज ब्लैंक, इसमें कुछ लिख लें, देन वी विल डिस्कस पार्टीशन ऑफ बंगाल इन डिटेल. नाउ वी आर कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट. So these steps, whatever the steps he is taking here, the objective is what? To suppress the growth of Indian nationalism. But he will also initiate various administrative works. इसके अलावा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स के लिए भी कर्जन जाना जाता है. और वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स क्यों कर रहा है? टू मेक द कॉलोनियल स्ट्रक्चर परमानेंट इन इंडिया. याद रखें. So Curzon, read this. Curzon also introduced many administrative works, and the main purpose was to make colonial structure permanent in India. Now here we will write the example of his administrative works. Okay, what are important works? Administrative works initiated by Curzon. ठीक है, right point. Famine Commission. पहले भी एक फेमाइन कमीशन आपको बता चुका हूं, याद है ना, रिचर्ड स्ट्रैची. ओके, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, फेमाइन कमीशन. ठीक है, यहाँ पे इसने एक फेमाइन कमीशन बनाई, नाम था एंथनी मैकडोनल कमीशन. तो क्वेश्चन हो सकता है एंथनी मैकडोनल कमीशन मैच करने के लिए, सो यू विल से इट वाज फेमाइन कमीशन. तो फेमाइन कमीशन, एंथनी मैकडोनल कमीशन, एंथनी मैकडोनल कमीशन. कई बार मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, so for that you need to know famine commission, Anthony McDonald commission. Right, next point. Okay, irrigation commission, irrigation commission, famine commission, the second is irrigation commission. Okay, and the name here, right, the chairman of this commission was Colin Scott, Sir Colin Scott, Sir Colin Scott, name of chairman Colin Scott, Sir Colin Scott. Right, next point. Okay, police reforms, police reforms, military reforms, police reforms, military reforms. ठीक है, write some facts here. Okay, police reforms, military reforms. ठीक है ना, police reforms में write this. Police commission appointed a police commission in 1902. He appointed a police commission in 1902 under the chairmanship of Sir Andrew Fraser. Under the chairmanship of Sir Andrew Fraser. These are important facts. Police Commission in 1902 under the chairmanship of Sir Andrew Fraser. Under the chairmanship of Sir Andrew Fraser. Okay. Right, next. Military reforms. Right. Under the leadership of Lord Kitchener. Military reforms under the leadership of Lord Kitchener. ये सब कर्जन के टाइम हुआ है. Military reforms, okay, under the leadership of Lord Kitchener. और यहाँ पे एक और वर्ड लिख लेना, that is Kitchener test, right? Kitchener test, Kitchener test. Read this. Soldiers had to undergo, or the military battalions had to undergo a test, that is Kitchener test. ये military reforms का हिस्सा था, right? Okay, battalion, okay, was to undergo a test that is known as Kitchener test. बटालियन को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता था, दैट इज नोन एज किचनर टेस्ट. ओके, उसको क्या कहते थे? किचनर टेस्ट. गॉट इट? नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट. ओके, रेड दिस. नेक्स्ट पॉइंट, फॉरेन पॉलिसी. रेड दिस. फॉरेन पॉलिसी, सेंडिंग, ओके, सेंडिंग missions to Tibet, send missions to Tibet. Okay, तिब्बत में मिशन भेजा, डिप्लोमेटिक मिशन. ठीक है, रीजन था वही रशियन इन्फ्लुएंस, नॉर्थ वेस्ट से जो भी हिस्सा था. तो मिशन टू तिब्बत. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. मिशन टू ओके, पर्सियन गल्फ, मिशन टू पर्सियन गल्फ. ठीक है, तिब्बत जो डिप्लोमेटिक मिशन भेजा गया था, राइट, तिब्बत में द हेड ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन वाज सर कर्नल यंग हस्बैंड. बताओ, बुढ़ापे में भी इसकी वाइफ इसको यंग हस्बैंड कहती होगी, राइट? कर्नल यंग हस्बैंड, राइट, कर्नल यंग हस्बैंड. दिस वाज द नेम, हेडेड बाय कर्नल यंग हस्बैंड. एक मजेदार नाम था ड्रिंक वाटर, याद है? जेईडी भेजता हूँ, जॉन इलियट ड्रिंक वाटर. ठीक है, दिस इज यंग हस्बैंड. ओके,
तो यंग हस्बैंड दूसरा नाम लिख लो, राइट? गल्फ, पर्शियन गल्फ मिशन, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन, हेनरी मैकमोहन। दिस इज ओनली फॉर फैक्ट, बाद में बताऊंगा एसेंस कैसे निकालना है। हेनरी मैकमोहन, राइट? नेक्स्ट पॉइंट, ओके, राइट? रेलवे रिफॉर्म्स, रेलवे रिफॉर्म्स, रेलवे रिफॉर्म्स, राइट, राइट, अंडर थॉमस रॉबर्टसन, रेलवे रिफॉर्म्स अंडर थॉमस रॉबर्टसन, रेलवे रिफॉर्म अंडर थॉमस रॉबर्टसन। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जान गए आप? दीज आर सम ऑफ द रिफॉर्म्स। राइट वन मोर रिफॉर्म, दैट इज, राइट, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट 1904, right? The purpose was to protect and preserve Ancient Monuments Act 1904. The purpose was to protect and preserve. The purpose was to protect and preserve ancient monuments of the country. The purpose was to protect and preserve the ancient monuments of the country. This was the purpose, to protect and preserve the ancient monuments of the country. ठीक है? So Curzon is known for his reforms, but अब देखो कुछ, अब एसेंस निकालो। ये फैक्ट तो आप याद कर लोगे मैच करने के लिए कभी आए तो। एसेंस क्या है अबाउट कर्जन? कर्जन वॉज सेंट टू इंडिया एज a viceroy at a point when growth of Indian nationalism was taking place, when the Indian nationalist sentiments were consolidating under the leadership of a pan-India political forum, Indian National Congress. मेंस में ऐसे लिखा जाता है, मेरी बात समझ गए ना? केवल फैक्ट्स फैक्ट्स नहीं लिखते। Now, at this point of time, okay, Curzon was giving a challenging task, और वो challenging task क्या था? Okay, how to suppress the growth of nationalism in the minds of Indian people. कैसे suppress किया जाए? Plus, okay, how to convince them that the British rule in India is for the betterment of Indian people. ये बहुत मुश्किल काम है, उनको कन्विंस भी कर लेना कि इंडिया में ब्रिटिश रूल क्या है, इंडियंस के बेटरमेंट के लिए है। और मतलब एक तीर से दो निशाना, मेरी बात समझ गया ना? इंडियंस को बेवकूफ बनाओ, ठीक है, प्लस दूसरी तरफ क्या करो? सप्रेशन करो नेशनलिज्म को। नाउ लुक एट दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, एक तीर से दो निशाना हो रहा है कि नहीं? दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विल से दैट हम रेलवे बोर्ड लेके आ रहे हैं। रेलवे बोर्ड इसी की रिकमेंडेशन पे आया था, जो बताया ना आपको, रेलवे रिफॉर्म्स। ओके, रेलवे बोर्ड, थॉमस रॉबर्टसन। तो ही व्हाट ही सेइंग, bringing reforms in railways, bringing reforms in police system, bringing reforms in military, bringing reforms in education system, bringing reforms in irrigation, how to counter the famine, सब कुछ तो कर रहा हूं। क्या उसने मैसेज दिया कि आई एम ब्रिंगिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स? यस, वो मैसेज देने में सक्सेसफुल है कि आई एम हियर इंट्रोड्यूसिंग सो मेनी रिफॉर्म्स इन इंडिया। फेमाइन कमीशन भी मैंने बनाया, ये सारे के सारे काम किए। वो थोड़ी ना कहेगा कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट में ला रहा हूं ताकि इंडियंस को बाहर किया जाए, नहीं। ही विल से दैट टू मेक द स्ट्रक्चर मोर रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा इफिशियंसी बेहतर हो, इसलिए मैं ला रहा हूं। ओके, ही वॉज अ स्ट्रिक्ट इम्पेरियलिस्ट, हाउ वी कैन सी। नाउ दिस बंगाल, देखो समझो इस बात, बंगाल, we all know that Bengal was the most enlightened part of the country. It was the most enlightened part of the country. British rule established here, socio-religious reforms यहीं से start हुए थे, socio-religious reforms in India। और एक बात बताओ, socio-religious reforms बंगाल में कब से माना जाता है स्टार्ट हुए थे? याद है ब्रह्म समाज 1828? It means that this 19th century, 19th century का ये फर्स्ट हाफ है 1801 टू 1850, और ये क्या है? सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में 1828 क्या है? ब्रह्म समाज, ये बात हमको पता है। और इसके बाद लगातार क्या है? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म इश्यूज आर ग्रोइंग। So this was the time when in Bengal socio-religious reform movements were also at its peak. And what these socio-religious reform movements intended for? To promote social unity, to promote religious unity in the minds of the people कि हिंदू मुस्लिम एक है, all caste are equal, caste rigidities को खत्म करो। तो these socio religious movements were promoting what? Unity of Indian people,
social unity, religious unity. It was promoting unity. And unity is very dangerous for what? For the presence of colonial rule in India. Unity is very dangerous for the presence of colonial rule in India. And Bengal has become the epicenter of socio-religious reform movements. So what Curzon did? Curzon will first say that we are going to do what? Partition of Bengal. हम partition of Bengal करने जा रहे हैं. And why we are going to do this? Curzon will say that we are going to do this to promote administrative efficiency. ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में it will be easier to administer Bengal. Administrative efficiency will make the lives of Bengalis people more easier. इससे बंगाली लोगों का जीवन क्या हो जाएगा? ज़्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है? Administration will become easier, and that's why we are going to take the decision of partition of Bengal. And at that time, Bengal means what? Bengal, Bihar, Odisha, असम भी जोड़ो इसमें, ये भी है, सब है. All this is Bengal. So he's saying that this is a very vast province. This is a very vast province. And in this vast province, it becomes very difficult to rule, and that's why, okay, the administration will become better when it will be partitioned. Now, suppose the claim, अगर इसका claim सही होता तो there could be what? Linguistic partition हो सकता था. Linguistic partition हो सकता था. लेकिन इसने क्या सजेशन दिया कर्जन ने? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है समझने वाली. व्हाट कर्जन इज सेइंग, कर्जन ये कह रहा है कि बंगाल का जो ये ईस्टर्न पार्ट है, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल, ईस्टर्न पार्ट ऑफ बंगाल इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ असम, ठीक है, दिस विल बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस. इसको हम क्या कर देंगे? दिस विल बी मेड अ सेपरेट प्रोविंस. एक सेपरेट प्रोविंस बना देंगे. And the capital of this separate province will be Dhaka. जो बांग्लादेश ढाका आज नाम सुनते हो ना, the same. Okay. And what is the logic behind this? कर्जन का दिमाग क्या है इसमें? तो देखो, in this part, okay, here the population, when you look at the demographic structure, you will find that this is what? Muslim majority area. ये कैसा एरिया है? मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया. other minorities are, Hindus are also there, but इस part में Hindus क्या है? They are minorities. Hindus क्या है? Minorities. And Muslims are majority. So this is basically Muslim majority. अब इसके बाद देखो, अब दूसरा स्ट्रक्चर देखो. Suppose this entire area is United Bengal. मान लो ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? United Bengal. This concept is very important. And in United Bengal, which religious group will be majority population? Hindus. यूनाइटेड बंगाल में मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसकी होगी? हिंदूज की. माइनॉरिटी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन विल बी द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन होगी ना. नाउ रिलेट वन थिंग, आपको मैंने बताया था जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट. याद करो सोशलिस्ट रिफॉर्म्स के कॉन्सेप्ट को. हिंदूज वेयर मच अहेड, हिंदू ज्यादा आगे थे. सोशलिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट किस रिलीजियस ग्रुप में सबसे पहले आया था? हिंदूज में. मुस्लिम्स में एक टाइम लैग है. अलीगढ़ मूवमेंट 1875 में. So there is a time lag of 50 years. So what we see that when we talk about job and employment opportunities, so who is ahead? Hindu community or Muslim community? तो Hindus are much ahead. ये ज़्यादा आगे है. Muslims here are suffering. Why Muslims are suffering? इसका एक रीजन क्या है? 50 years lag in socio-religious reform movement. 50 साल पीछे. 1875 में अलीगढ़ मूवमेंट से यहाँ पे एजुकेशन प्रमोट करने की बात होती है. गॉट इट. दूसरा क्या है? ब्रिटिश रूल हैज रिप्लेस्ड मुस्लिम रूल इन इंडिया. तो मुस्लिम से उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी रहेगी, तो मुस्लिम्स को डिस्करेज किया जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट में. ये भी ध्यान रखो कि ब्रिटिश रिप्लेस्ड मुस्लिम क्लास ना. सो दे विल डू व्हाट? ओके, सो राइट दिस दैट द मुस्लिम्स वेर आल्सो सफरिंग, ओके, discrimination by British because Muslim rule was replaced by the British rule. दूसरी प्रॉब्लम ये थी, तो मुस्लिम्स वेर लैग बिहाइंड. अब देखो कर्जन का क्या सजेशन है मुस्लिम ग्रुप को? डिवाइड एंड रूल.
हिंदूज और मुस्लिम्स को आपस में लड़ाने का तरीका, कर्जन क्या कहेगा मुस्लिम ग्रुप से कि इफ दिस बंगाल विल बी अ यूनाइटेड बंगाल, तो क्या होगा यूनाइटेड बंगाल में? हिंदूज आर मेजॉरिटी पॉपुलेशन, they are in a more advanced stage. So whenever we talk about we will bring reforms, we will create new job opportunities, so these job opportunities will be availed by whom first? सबसे पहले इसके दावेदार कौन हो जाएंगे? हिंदूज हो जाएंगे। देखो दिमाग कितना खतरनाक है। बट अगर दिस पार्ट को इफ वी आर सेपरेटिंग इट, अगर इसको हमने अलग कर दिया, सो इन दिस पार्ट मेजॉरिटी पॉपुलेशन कौन है? हु इज द मेजॉरिटी पॉपुलेशन? मुस्लिम्स आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। तो ये अलग प्रोविंस हो जाए, और अगर हम आपको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दे दें, स्पेशल सेफगार्ड दे दें, तो जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट किसके पास रह जाएगा? मुस्लिम्स के पास रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो अगर हम पार्टीशन करते हैं तो इससे मुस्लिम्स को बेनिफिट होगा, मुस्लिम्स विल गेट बेनिफिटेड, पहली चीज क्लियर। सो इफ दिस पार्टीशन इज डन ऑन रिलीजियस लाइंस, if this partition is done on religious lines, so Muslim interests can better be protected, Muslim interests को ज्यादा बेहतर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। if this partition is done on religious lines, Muslim interests can better be protected. Do you think that they are trying to sow the seeds of communalism in the minds of Indian people? Yes or no? Yes. दूसरा ऑप्शन हो सकता था linguistic division, but they are not going for linguistic division. They are trying to do the partition of Bengal on the basis of religious division. And what they are claiming that we are taking this decision of partition of Bengal to promote administrative efficiency. कह कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है। कह रहे हैं कि why we are taking this decision. So the Curzon is saying that we are taking this decision to promote administrative efficiency, right? They are not partitioning Bengal on linguistic lines. They are trying to do partition of Bengal on religious line, and the main purpose is, okay, to create a gap between Hindus and Muslims. Okay, creating gap between Hindus and Muslims mean what? Breaking unity of Hindus and Muslims. Hindu और Muslims की unity को तोड़ना. And when unity will be broken, what will happen? Our Indian nationalism will become weaker. ठीक है ना? Our consolidated nationalist sentiments will get weaker. So read this. The partition was done on religious lines. The partition was done on religious lines. And the main purpose behind this was to break the unity of Hindus and Muslims. And in this way, the main purpose behind this was to break the unity of Hindus and Muslims. And in this way, to suppress the growth and development of nationalist feelings and sentiments in India. And in this way, the purpose was to suppress the growth and development of nationalist feelings and sentiments in India. Okay, right, next point. Pretext, बहाना क्या था? Pretext, right? Pretext of administrative efficiency. Pretext of administrative efficiency. ये बहाना बनाया गया कि we are doing this to promote administrative efficiency. It is very difficult to govern a vast province like Bengal, okay, it has extended territories, तो इसको इसलिए इसका हम partition कर रहे हैं. But this was not the real reason. Okay, the main purpose was to break the unity of Hindus and Muslims. Clear? तो कर्जन क्या है? Enlightened imperialist or hardcore imperialist? Hardcore imperialist. He is trying to make a balance. On one side, convincing Indian people that we are doing all this to bring reforms in India. ये भी क्या कह रहा था? Reforms ला रहा हूँ, का efficient administration. But the real purpose is growth and suppression of nationalist feelings and sentiments. But this time, this decision, right? इसमें एक डेट लिख लेना 16 अक्टूबर
1905 partition of Bengal. This date is generally asked in exam. ठीक है ना? 16 October 1905 partition of Bengal. 16 October 1905. ठीक है? 16 October 1905. Got it? Now, what will happen? This Curzonian decision, Curzon ने ये decision लिया. Curzonian decision of partition of Bengal was a miscalculated decision, right? It was a miscalculated decision. कर्जन का ये डिसीजन क्या था? मिसकैलकुलेटेड डिसीजन. इसके पहले भी उसने डिसीजंस लिए थे जिससे कि ग्रोथ एंड सप्रेशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स हो, बट दिस टाइम दिस डिसीजन वाज अ miscalculated decision. Why? There is a reason. Okay, right. Read this. The people of Bengal, the people of Bengal, okay, okay, they opposed this decision. They opposed this decision. उन्होंने इस डिसीजन को क्या किया? अपोज किया. Right. Hindus and Muslims came together. Hindus and Muslims came together. They joined hands. Hindus and Muslims came together. They joined hands. They opposed this decision. They tied Rakhi on each other hand. They tied Rakhis on each other hands. They tied Rakhis on each other hands, and they opposed the decision of this government. They opposed the decision of this government. Clear? Decision को क्या किया? Oppose किया. Okay? And not only oppose, but they also started a movement that is called anti-partition of Bengal movement. They also started a movement that is called anti-partition of Bengal movement. Okay, on this issue, anti-partition of Bengal movement, and this movement was continued from 1905 to 0708. This movement was continued from 1905 to 1907. That is anti-partition of Bengal movement. इसका मतलब क्या हुआ? This movement is the first mass movement in India, right? It was also the first mass movement in India. ये इंडिया का क्या है? पहला मास मूवमेंट है. ओके, और मास मूवमेंट क्या दिखलाता है? ग्रोथ ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. इट इज मोर कंसोलिडेटेड नाउ. तो टारगेट था इसको ब्रेक करना, एंड इट शोज दैट मास मूवमेंट शोज द more consolidated nationalist sentiments. It shows what? More consolidated nationalist sentiments and feelings. More consolidated nationalist sentiments and feelings. Anti-partition of Bengal movement. And this movement also got read this official support of INC. Official support of Indian National Congress. It means Indian National Congress supported this movement. Official support to Indian National Congress. That is important point. Now I am going to discuss one important concept here. ठीक है ना? Now this is the स्वदेशी anti. पहले मैं यही लिख रहा हूँ, एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट. ये आपको पता होगा. 1905 to 1908. And I have already discussed with you that second phase of Indian national movement ये कब से शुरू होता है? You all know this. From 1905 to 1920. यही है ना? तो second phase of national movement starts with anti-partition of Bengal movement. शुरू हो जाता है. और second phase में कौन dominate कर रहा है? Who is dominating second phase? So here exactly extremists are dominating. अब समझो इस बात को. पहले एक सिंपल सी कहानी से, बहुत टेक्निकल चीजें आ सकती हैं इसमें. कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टोरी समझे रहोगे, you will be able to solve the question. What is the technical part? When British government will take this decision, or when Curzon will take this decision of partition of Bengal, now at this time Indian National Congress 1885 to 1905 पहला फेज था ना, फर्स्ट फेज. And in first phase in INC who was dominating? Moderates were dominating. इन्हीं की चलती थी. एक्सट्रीमिस्ट थे बट उनकी बात ज्यादा नहीं सुनी जाती थी, ऐसा समझो.
मॉडरेट्स का पूरा दबदबा था. Now at this point of time, extremists will, okay, ask the question to moderate, that is it the result of your policy of 3P? For the last 20 years, you believe in which strategy? Now the extremists are asking question to moderates, that for the last 20 years, moderates are believing the strategy of 3P. They believe in British sense of justice. और उसका नतीजा ये हुआ कि टुडे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. सो व्हाट आर यू डूइंग नाउ? सुबह सुबह पहुंच गए मॉडरेट्स क्या, का जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करो, अपना डिसीजन वापस ले. मॉडरेट्स बिलीव इन व्हाट? नेगोशिएशंस, बातचीत में भरोसा करते. नाउ एक्सट्रीमिस्ट आर आस्किंग कि जाओ ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करो, कर्जन से बात करो कि कर्जन मस्ट टेक बैक इट्स डिसीजन, कर्जन अपना डिसीजन वापस ले. मॉडरेट्स गए, कर्जन से बात की, कर्जन ने कहा चलो भाग जाओ, मैं डिसीजन नहीं वापस लेने वाला. अब ये करे तो क्या करे? एक्सट्रीमिस्ट बार बार कह रहे थे कि योर पॉलिसी इज, यू फॉलो पॉलिसी ऑफ 3P ना, तो गो एंड डू रिक्वेस्ट फ्रॉम द कर्जन कि आप इस डिसीजन को वापस लो. एंड कर्जन वाज नॉट रेडी टू विथड्रॉ दिस डिसीजन. नाउ एक्सट्रीमिस्ट विल से दैट दिस टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च अ मूवमेंट, और इस बार हम आपकी सुनेंगे नहीं. वी आर गोइंग टू लॉन्च अ मूवमेंट. अगर आपको हमारा सपोर्ट करना हो करो, नहीं करना है, बट इस बार मूवमेंट होके रहेगा. तो एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट की बात उठाई किसने सबसे पहले? हु बिलीव्ड, देखो मैंने एक्सट्रीमिस्ट बता, हु बिलीव्ड इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस? एक्सट्रीमिस्ट. और मास मूवमेंट क्या है? इफ यू बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ मासेस, देन यू विल ऑर्गेनाइज मास मूवमेंट ना. तो एक्सट्रीमिस्ट ने यहां पे बात की मास मूवमेंट की, बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट बिलीव इन द कैपेसिटी ऑफ द मासेस, तो उन्होंने मास मूवमेंट की बात की. Now, when they will say that this time we will not listen to you, we are going to launch anti-partition of Bengal movement. तो moderates को भी लगा कि ठीक है, support करते हैं. Why? Because their demand was genuine. So what will happen? This suggestion of extremists will be accepted by moderates. Moderates भी इस suggestion को accept कर लेंगे. और बताओ, जब moderates ने भी इस acceptance कर लिया suggestion को, it means इस मूवमेंट को क्या मिल गया? ऑफिशियल सपोर्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. सो व्हाट इज द पॉइंट हियर? स्वदेशी मूवमेंट और एंटी पार्टीशन ऑफ बंगाल मूवमेंट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट ओनली. करेक्ट और इनकरेक्ट? It was support. It was not. It was supported by moderates only. Incorrect. It was supported by both moderates and extremists. Swadeshi movement or anti-partition movement failed to get the official support of INC. Incorrect. It got the official support of INC. So write this point, that anti-partition of Bengal movement or Swadeshi movement, right, was supported by moderates and extremists both. Point 1. It got the official support or platform of INC also. It got the official support and platform of Indian National Congress also. इसको क्या मिला? Official support and platform of Indian National Congress. Got it? Now, it got the official support and platform of Indian National Congress also. Anti-partition of Bengal movement. अब देखो, strategies of this movement, this we need to understand. What is the strategies of this movement? ठीक है, strategies क्या है? So strategies में one must read this Swadeshi or promotion of Swadeshi is one of the strategies here. Promotion of Swadeshi. Swadeshi means indigenous goods. That is one of the important strategy here. Promotion of Swadeshi is one of the important strategy. The second important strategy is, right, boycott. This is the second important strategy, boycott. Boycott of what? British goods. And when we talk about British goods, so mainly here textiles or foreign clothes, and we can write one more point, that is wine. Textiles, foreign clothes and wine. ठीक है ना? So promotion of Swadeshi, and the second point is boycott. ठीक है? Boycott of British goods. Now which is the more dominant strategy? Swadeshi.
It was a more dominant strategy. ये सबसे dominant strategy था, ठीक है? It was the most dominant strategy. And due to this dominant strategy, anti-partition of Bengal movement is also known as स्वदेशी movement. इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? स्वदेशी movement भी कहते हैं. Anti-partition of Bengal movement was also known as स्वदेशी movement. ठीक है? Continued from 1905 to 0708 तक ये रहा. अब यहाँ पे देखो, this movement was centered where? Centered in Bengal. Bengal. But its reflections were also seen in other parts of India. ठीक है ना? This movement was centered in Bengal, but its reflections were also seen in other part of India. Its reflections were also seen in other parts of India. Reflections were also seen in other parts of India, but officially this movement is centered in Bengal only. ध्यान से रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आईएनसी ने ऑफिशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया इस मूवमेंट को, एंड ऑफिशियली दिस मूवमेंट इज कंसंट्रेटेड इन बंगाल रीजन ओनली. केवल और केवल बंगाल रीजन में. ऑफिशियली दिस इज कंसंट्रेटेड इन बंगाल रीजन ओनली. नाउ बंगाल में ये मूवमेंट चल रहा था, and its reflection was seen in other parts of India also. It was popular in other parts of India, but officially it was not extended to other parts of India. ध्यान से समझिए, मैं ऑफिशियली की बात कर रहा हूँ कि आईएनसी ने कहे, आईएनसी कहे कि ऑल इंडिया मूवमेंट है. नहीं, ऑफिशियली इट वाज नॉट ऑल इंडिया मूवमेंट. ऑफिशियली दिस मूवमेंट वाज सेंटर्ड इन बंगाल ओनली. Now looking at its popularity, extremists will raise a demand. And what is the demand? That this movement should be extended in other parts of India also. ठीक है? So write this point. Looking at the popularity of this movement, right? Looking at the popularity of this movement, looking at the growing popularity, write this, looking at the growing popularity of Swadeshi movement, extremists raised a new demand. Extremists raised a new demand from INC. Extremists raised a new demand from INC. और ये नया डिमांड क्या था? राइट, एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. दिस वॉज द डिमांड. एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल रीजन. एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल रीजन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. ये डिमांड था. एक्सटेंशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट आउटसाइड बंगाल रीजन इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में भी, ठीक है, इसका एक्सटेंशन होना चाहिए. एंड दिस डिमांड वाज एक्सेप्टेड बाय आईएनसी और रिजेक्टेड बाय आईएनसी? रिजेक्टेड बाय आईएनसी. दिस डिमांड वाज सपोर्टेड बाय मॉडरेट्स और नॉट सपोर्टेड बाय मॉडरेट्स. सो राइट दिस पॉइंट. दिस डिमांड वाज not supported by moderates and INC, or this demand could not get the validation of official support of INC. ठीक है ना? It was not supported by moderates, it was not supported by INC. और ये रीजन क्या हो गया? रीजन फॉर द डेडलॉक बिटवीन मॉडरेट्स एंड extremists. Read this. This was one reason for the deadlock between moderates and extremists. This was one reason for the deadlock between moderates and extremists. अब आप क्या बता सकते हो कि why moderates were refusing to accept this demand? Can you make some guess? What could be the reason? Moderates were not ready to accept this. There is a reason. And what is the reason? Moderates ने कहा, moderates were like mind of the Indian national movement. बता चुका हूँ. Extremists are hurt, emotionally charged nationalism. Moderates were well aware of the fact that British rule is not only in India, it is in other parts of the world also. And wherever the people, okay, did what? Okay,
wherever the people are following some radical policies, British are forcefully suppressing those revolts and rebellions. Now moderates are fearing कि अगर इस मूवमेंट का ऑफिशियल एक्सटेंशन बंगाल से बाहर हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल फोर्सफुली सप्रेस दिस मूवमेंट. सो दे आर सेइंग दैट ऑफिशियली आप इसको कहां तक रखो, बंगाल तक रखो. क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से ये परमिशन लेके आए थे. ठीक है कि भाई आप इंडियंस की बात को सुनो. ठीक है, और उनको अपनी बात रखने का, मूवमेंट करने का एक अधिकार है. दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर सिविल राइट्स. ओके, so if they are setting on roads and if they are raising such issues, if they are not using force, if they are not using violence, so you cannot suppress them. तो in this way they were somehow managed British government कि British government forceful suppression का मेथड ना यूज करे. मेरी बात समझ गया ना? और जैसे ही इस मूवमेंट को आप ऑल इंडिया करोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करेगी? फोर्सफुल सप्रेशन करेगी. ये बात एक्सट्रीमिस्ट को समझ में नहीं आ रही थी. एक्सट्रीमिस्ट ने कहा नहीं, इतना हमें नहीं समझ में आता. बंगाल में मूवमेंट हो रहा है और अनऑफिशियली तो कई जगहों पे हो रहा है. बॉम्बे, पंजाब, मद्रास, हर जगह स्वदेशी मूवमेंट था, बट ऑफिशियल नहीं था. ऑफिशियल कहाँ था? केवल बंगाल में. एक्सट्रीमिस्ट ने कहा ऑफिशियली अनाउंस करो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. मॉडरेट्स नहीं माने. तो एक रीजन ये है, reason for deadlock between moderates and extremists. Now there is another reason, right? Passive resistance, right? एक और word है passive resistance. Passive resistance, that is also very important point. Passive resistance. Passive resistance, ठीक है ना? What is this passive resistance? Okay, passive resistance को in simple words we can say non cooperation. Right, this passive resistance simply means non cooperation. पैसिव रेसिस्टेंस मींस नॉन कोऑपरेशन. और यहां नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या है? देखो, पैसिव रेसिस्टेंस, नॉन कोऑपरेशन, व्हाट डज इट मीन? तो देखो देखो पहले क्या है, इस यहां पे बायकॉट का मतलब क्या है? बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स ओनली. यहां पे केवल हम गुड्स की बात कर रहे हैं. एंड पैसिव रेसिस्टेंस मींस व्हाट? पैसिव रेसिस्टेंस मींस, राइट, नॉन कोऑपरेशन. इट मींस व्हाट? राइट दिस, इसको ऐसे समझ सकते हो. राइट दिस, boycott of law codes, boycott of law codes, boycott of schools and colleges, boycott of British Indian administrative services. This is passive resistance. Okay, boycott of law codes, boycott of British established schools and colleges. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? पैसिव रेसिस्टेंस. नॉन कोऑपरेटिंग विद द इविल. राइट, पैसिव रेसिस्टेंस मींस नॉन कोऑपरेशन विद द इविल. हु इज द इविल? कॉलोनियल स्ट्रक्चर इज द इविल. तो नॉन कोऑपरेशन विद द इविल, इतना मतलब होता है पैसिव रेसिस्टेंस का. बायकॉट ही तो हुआ ना. इफ देयर इज अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज सेटअप बाय ब्रिटिश, so the Indian teachers or professor will stop teaching there and Indian students, okay, will leave their colleges. वो कॉलेज छोड़ देंगे, टीचर पढ़ाना छोड़ देंगे, बच्चे पढ़ना छोड़ देंगे. लॉ कोर्ट्स हैं, इंडियन लॉयर्स प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे. तो ब्रिटिश जज अकेले क्या कर लेगा भाई? ठीक है, लोग अपने मुकदमे को लेकर कोर्ट में जाएंगे नहीं. दिस इज व्हाट? नॉन कोऑपरेशन विद द इविल, दैट वी विल नॉट कोऑपरेट. ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर है, इंडिया में रह रहा है, ठीक है, बड़ा सा बंगला बनाया है, उसको 10-20 नौकर चाहिए. नौकर सारे कौन थे? इंडियंस. नौकर जाना छोड़ देंगे, वॉशरमैन नहीं जाएगा, गार्डनर नहीं जाएगा, कुक नहीं जाएगा उसके घर पे, तो उसकी बीवी भाग जाएगी छोड़ के इंग्लैंड. फिर पीछे पीछे वो भी भाग जाएगा. कितना आसान तरीका है, वेरी इजी, राइट? सो इफ वी विल स्टॉप नॉन कोऑपरेशन विद द इविल, व्हाट विल हैपन? द ब्रिटिश विल लीव इंडिया. उधर हम क्या कर रहे हैं? बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स कर ही रहे हैं. तो इनका ये प्लान था. बट दिस पैसिव रेसिस्टेंस प्रोग्राम, इट वाज पॉपुलर. लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया था. बट this program was also not officially validated by Indian National Congress. Moderates, उन्होंने ऑफिशियल कंफर्मेशन इस प्रोग्राम को नहीं दिया था. एंड व्हाट एक्सट्रीमिस्ट्स वर डिमांडिंग? वैलिडेट दिस प्रोग्राम ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस. ये हो रहा था कि नहीं? दिस वाज फॉलोड और नॉट? यस, इट वाज फॉलोड. इट वाज अ पार्ट ऑफ पॉपुलर प्रैक्टिस. हो रहा था, बट ऑफिशियल वैलिडेशन इस प्रोग्राम को नहीं था. ऐसे ही स्वदेशी मूवमेंट वाज
extended to other parts of India or not? You will say that yes, it was extended, but there was no any official validation of this. Okay, so write this point that passive resistance, right? Passive resistance program was popular during Swadeshi movement also, but passive resistance program was during Swadeshi movement also, popular during Swadeshi movement also, but it could not get official validation of Indian National Congress, but it could not get, or it failed to get official validation of Indian National Congress. इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऑफिशियल वैलिडेशन नहीं मिला. इट फेल्ड टू गेट द ऑफिशियल वैलिडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. समझ में आया? आसान है ना? तो कितने मुद्दे हैं जहां पे डेडलॉक है? 2 इश्यूज. डेडलॉक बिट देखो, स्वदेशी मूवमेंट बोथ आर टुगेदर. इन स्वदेशी मूवमेंट moderates and extremists are fighting together, but there is a deadlock between these two groups. Deadlock कितने हैं? 2 हैं. First deadlock क्या है? Deadlock on the issue of extension of Swadeshi movement outside Bengal, and the second was, okay, give deadlock on giving validation or official confirmation to passive resistance program. मेरी बात समझ गया ना? These are 2 deadlocks. ठीक है ना? Got it? Very simple. बिपिन, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स तो यहाँ आ गया ना. देखो, बाइकॉट इज अ स्ट्रेटजी. बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, टेक्सटाइल्स, वाइन, पिकेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स, और यहाँ पे क्या, बर्निंग फॉरेन क्लॉथ्स. ठीक है, ये एक एजेंडा था. तो हैव यू गॉट दिस आइडिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, डेडलॉक बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट. तो ये डेडलॉक कहाँ दिखेगा हमें? सूरत सेशन में. बट बिफोर दिस, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट what was the you can say methods and program that were followed. What are the, you can say that, aspects of Swadeshi movement? This we need to discuss. ठीक है ना? Now I will discuss these concepts tomorrow in the next class. ठीक है ना? We will discuss that कि क्या क्या aspects हैं, and you will find that whatever I am discussing in the next movements, you will find common concepts. बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्या होते चले जाएंगे? कॉमन. सो इन एनसीएम दीज थिंग्स विल कंटिन्यू. व्हाट वी विल रीड इन एनसीएम दैट विल कंटिन्यू इन सीडीएम. सीडीएम में वो कंटिन्यू हो जाएगा. सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज कॉमन फीचर्स, और ऐसे क्या होगा, आपको पूरा नेशनल मूवमेंट याद हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, डू यू फाइंड similarity in political demands raised by INC and similarity in political demands raised by RPS also? Yes. Military demands, economic demands, सब में तो सिमिलर है. ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न. हर चीज को अलग अलग तरीके से याद नहीं करना. ठीक है ना? आइडेंटिफाई द कॉमन एरिया एंड देन वी विल बी एबल टू राइट द आंसर. ठीक है ना? सो टुडे फ्रॉम 6:30 करें या 7 करते हैं? 7 करते हैं. 7 PM टू 9 PM. ठीक है ना? राइट? हो सकता है ये 9:30 चला जाए. ठीक है, बिकॉज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. चीज़ों को कनेक्ट करूंगा मैं, राइट? लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास इन इंडिया प्लस, आपने ऑलरेडी ये पार्ट पढ़ ही लिया है ना, पहले क्लास में डिस्कस किया ना. इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रिटिश, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं. तो वी विल कनेक्ट योर स्टैटिक विथ करंट. ठीक है ना? और ये बड़ा डिस्कशन होगा, मिनिमम 2 आवर्स का तो होगा ही होगा. ओके, सो दिस विल डिस्कस 7 PM to 9 PM. ठीक है ना? तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन. ठीक है ना? ओके. बाकी दिस टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो. ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, केवल और केवल पीवाईक्यू करो, ओनली पीवाईक्यू, बिकॉज एवरीथिंग एल्स आई एम डिस्कसिंग इन क्लास, आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग फैक्ट्स, बट आपको प्रैक्टिस क्या करना है? ओनली फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन. क्लास में मैं इतने आराम से डिस्कस कर रहा हूँ ना कि चीजें आपको याद हो जाएंगी. वंस द बैच विल फिनिश and you will revise your notes 2 or 3 times, okay, you will find that you have developed, okay, excellent command on modern Indian history. ठीक है ना? That's why we are taking a lot of time. केवल PYQs प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो. ठीक है ना? इतना ध्यान रखना. चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी वन ऑफ यू? नो? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. वेलकम. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम.